हेलो स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम लोग क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे कि सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में क्या डिफरेंस होती है। ट्रायंगल कब सिमिलर होते हैं और कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, उनके सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी का बेसिक डिफरेंस क्या है और सिमिलरिटी की क्या क्राइटेरिया होती है। तो पहले हम लोग ये देख लें कि डिफरेंस सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, ये दो टॉपिक हैं। सिमिलरिटी हमें इस 10th क्लास में पढ़नी है और कॉन्ग्रुएंसी हमने 9th क्लास में पढ़कर आए हैं। सिमिलर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में सबसे बड़ा डिफरेंट है कि सिमिलरिटी में शेप सेम होता है। सिमिलर ट्रायंगल have same shape, but in congruency, congruent triangle have same shape and size. First difference. And second difference is that कि similar triangle, the side of similar triangles are proportional, but in congruency, congruent triangles have equal sides, ठीक है। So we can say कि congruent all congruent triangles are similar. All congruent triangles are similar, but all similar triangles are not congruent. Good. And before discussion the criteria of similarity, we want to discuss about the corresponding side and corresponding angles of triangle. What is the corresponding side and corresponding angle of the triangle? With example, you can see ABC and DEF are two triangles. A, B, C, D, E, F are two triangle. So AB corresponding side means corresponding side means AB corresponding to D, BC corresponding to EF, and AC corresponding to DF. Similarly, corresponding angle equal to angles means angle A corresponding to angle D, angle B corresponding to angle E, and cross angle F corresponding to angle E, ठीक है। तो these are called the corresponding, and we can write here the triangle ABC is corresponding to
triangle DEF, like AB corresponding to D, BC corresponding to EF, and AC corresponding to TF. You can see here, by the symbolic we can write the corresponding side and angles. Here angle A corresponding to angle A corresponding to angle D, angle B corresponding to angle E, and angle C corresponding to angle F. Now there are three criteria of the similarity of triangle. There are three criteria of similarity of triangle. First criteria is called the A A A, angle 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 angle. What is the angle means? a, what is the angle means हो गया कि स्टेटमेंट हमें इसको याद रखना है, इसे हमें प्रूफ नहीं करना कि इफ टू ट्रायंगल if in two triangles corresponding angles are equal, corresponding angles are equal, then their corresponding sides are proportional, and hence two triangles are called similar, and hence two triangles are called similar. Like अगर उनकी corresponding साइड इक्वल है तो उनके साइड क्या होंगे? प्रोपोर्शनल होंगे. लाइक दे ये नाउ एबीसी एक ट्रायंगल है और पी क्यू आर इज द अनदर ट्रायंगल. ए बी सी पी क्यू आर. अगर इसमें से एंगल ए इक्वल टू एंगल पी है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू है, और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर है, then we can say कि triangle ABC is similar to triangle PQR, and by CPST we can say AB upon PQ will be equal to BC upon QR and equal to AC upon PR, and vice versa. And vice versa. Vice versa means कि if in two triangles the of corresponding sides of triangles are proportional, then both triangles will be similar and have equal angles, like if D E F and P Q R,
In this triangle, D upon PQ equal to EF upon QR equal to DF upon PR, then triangle DEF is similar to triangle PQR, and also by CPCT angle D will be equal to angle P, angle E will be equal to angle Q, or angle F will be equal to angle R. And this rule is called this is called SS similarity criteria. Similarity criteria. Criteria. I think, is it clear? Now the third rule is called, and this is called the second. This is called the second rule, and third rule is called the SAS. SAS. Side, called the side angle side. In this rule, अगर ये दो ट्रायंगल्स हैं और उनके दो क्रॉसपोंडिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हैं और उनके इंक्लूडेड एंगल अगर आपस में इक्वल हैं, तो दोनों ट्रायंगल क्या होगा? सिमिलर होगा और वो इक्वी एंगुलर होंगे. इफ AB upon PQ equal to AC upon PR, then angle A equal to angle P, to by SAS similarity, we can say कि triangle ABC is similar to triangle PQR. And if the triangles are similar, then the side will be proportional or angle will be equal. Then side will be, all the side will be proportional and angle will be equal. And angle will be equal. Angle A equal to angle P, angle B equal to angle Q, and angle C equal to angle R by CPST criteria. This is the three rules of the similarity of the triangles, and we are used in many questions in these rules to solve the questions and etc. Okay, thank you.